guys, this is मैं अपूर्वा and you're watching Affordika. So आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे ब्यूटीफुल सा स्मोकी आई लुक which is a glam eye look हम create करते हैं in just 5 minutes. This is a very appropriate look which you can easily create in this wedding season. So without wasting any time, let's get started. So let's begin. मैंने अपना बेस ऑलरेडी कर लिया है. I've applied foundation, concealer, blush, tint, everything of that sort. तो आप देख सकते हैं पास से कुछ ऐसा लग रहा है. So अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि हाउ कैन वी क्रिएट ब्यूटीफुल ग्लैम स्मोकी आईज इन जस्ट 5 मिनट्स. सबसे पहले आपको कंसीलर लगाना है अपनी पूरी आईलिड पे ताकि ये हमारे आई शेडो के कलर्स को और ज़्यादा वाइब्रेंट दिखाए, जिससे कि हमारा आई शेडो और निखर के आए हमारे चेहरे पे. तो आज के लिए जो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द शेड 03. Now we'll blend all of this. After applying my concealer all over my eyelid, I'm going to set it with this loose powder from Lakme. After this, आज जो मैं आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो मैं इस पैलेट की हेल्प से क्रिएट करने वाली हूँ. दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, अ वेरी गुड पैलेट फॉर बिगिनर्स. तो इसमें से जो हम शेड लेंगे दैट इज गोना बी दिस शेड. इस शेड को आई विल अप्लाई इन माय क्रीज ओनली. ओके, now I take this shade from here, apply it on the edge only. Now I'll take this to my lower lash line as well. तो इसके लिए मैं फिर से ये वाला शेड लेने वाली हूँ. Now I'm going to take again the same shade that I applied on my upper lid and apply it on the edge of the lower lid. Now I'm going to blend all of this with this brush. Now I'm going to take this shade from here, that is deep brown shade, and I'll apply it at the edge of it to give it a more smoky dark look. See, now you can see how this looks. अब इसके बाद हम लोग जो ये inner corner है वहाँ पर एक glittery shade लगाएंगे. Now I'll again take this dome shaped brush and with the help of it, I'll take this shade from here and place it in between the glitter and the brown shade. I'll blend all of this together. Now I'll take the smaller brush and take this shade from here and I'll place it in the inner corner and the brow bone. I'll take this mascara from Maybelline and apply it on the lashes. Now I'll take the fake lash and I'll apply it on the eye. I've applied the lashes. Let's do the same with this eye as well. With this, we have completed the eye look. And इसके बाद मैं जल्दी से लिपस्टिक लगा लेती हूँ and then let's see the final look. With this, we come to an end of the video. If you liked my video, please subscribe to my channel and hit the bell icon right next to it. If you have any query or you want to see other looks in this channel, please comment down below and like this video and follow me on Instagram. This is my Instagram handle. So see you in the next video. Till then, bye bye. Love you.